Yeah, hello, my dear aspirants. A very good evening to all of you. Welcome to Abinash Pathshala. So, day 2, ଗୋଟେ 10 ଦିନର ପ୍ଲାନ୍ ଯେମିତି କାଲିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଆମେ ସଡନଲି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ର ଏକ୍ସାମ 10 ଦିନ ପୁରା ଅଛି ମାନେ ଆଜି ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ମାନେ ଆଉ 9 ଦିନ ଆଜିକୁ ଧରିକି 9 ଦିନ ତ ଏବେ ଏଇ ଟାଇମ ରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡାକ କଭର କରାଉଛି ଏଇ ରାତି 8ଟା ସେସନ ରେ ତ ଆଜି ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ପଲିଟି ର 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲେ 100 क्वेश्चन आज आम करवा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मो आडू रहिबो एंड गोटे रैपिड फायर टाइप रो जीवा बिकॉज़ मु बेसी टाइम नबा को चाहिबिनी विथ छोटो मोटो डिस्कशन करी जीवा बेसी डिस्कशन करिया भी टाइम भी होबनी हैला सो स्टार्ट करिया भी कंफर्म करियो समस्त मते सुनी परछो समस्त देखि परछो एंड लिंक को जते परियो टी शेयर करनियो सो दैट मैक्सिमम पिला सेशन जॉइन करि परंतु आ यार फायदा उठे परंतु विथ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 1 रो आमे जीवा एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस तो जितनी क्वेश्चन करेबी दीज आर वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड तम माने सब क्वेश्चन रो आंसर करबा को चेष्टा करिवो सो इट इज ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गाइस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कथा पडिची तो प्रेसिडेंट जदि पचाला तो प्रेसिडेंट होचन तमरो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाय द वे द फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड ऑन 9th डिसेंबर 1946 जोथरे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थिले तमरो प्रेसिडेंट टेम्पोररी प्रेसिडेंट परमानेंट प्रेसिडेंट हिसाब रे राजेंद्र प्रसाद पचारे वाइस चेयरमैन किए थिले ये वाइस प्रेसिडेंट एचसी मुखर्जी थिले राइट ता सहित या विषय रे आउ कोन क्वेश्चन पचारे जे कॉन्स्टिट्यूशन बनिया पई केते टाइम लागितिला है ना 2 वर्ष 11 मास 18 को दिन एडॉप्ट करले 26 नवंबर 1949 सेमिति क्वेश्चन गुडा का आसे हमें कमिंग सेशन कमिंग क्वेश्चन गुडा देखियो चलो सेकंड क्वेश्चन को जीवा तो क्वेश्चन वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा तमे जानिथिबे जे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दीटार काम करतुला गोटे कॉन्स्टिट्यूशन बनेवर काम करतुला ता सहित एज द पार्लियामेंट भी काम करतुला सो प्रायर टू इंडिपेंडेंस ए कथा अछि एंड से टाइम रे पिले जीबी मावलानकर जी होचन तमरो गणेश वासुदेव मावलानकर सी जो दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज द लेजिस्लेटिव बॉडी काम करतुला से दिन प्रिजाइड करथले जीबी मावलानकर सेही पई ताऊ कहउतला द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा ठीक है थर्ड क्वेश्चन को आसीबा पार्लियामेंट इज द पावर टू लेजिस्लेट with respect to a matter in the state list provided it is in the dash तो क्वेश्चन ता बढ़िया क्वेश्चन ता अछि देखिए केजन कहि परछो यार ऑब्वियसली तो तमे जानि छ भाई हमरो 7 शेड्यूल कोन करछि 7 शेड्यूल पावर गुडा को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जोडा कोने में डिवीजन ऑफ पावर ठीक अछि डिवीजन ऑफ पावर रे केतरा लिस्ट अछि पले तीनटा लिस्ट अछि 7 शेड्यूल तो तीनटा लिस्ट गोटे यूनियन लिस्ट गोटे स्टेट लिस्ट आ गोटे कनकरेंट लिस्ट यूनियन लिस्ट रे थिबा आइटम माने 100 टा आइटम ता ऊपर एक्सक्लूसिव पावर कार अछि पार्लियामेंट रो अछि लॉ बनेबो स्टेट पाखरे अछि केतरा पिले 61 टा आइटम जोथरे स्टेट बनेबो से कनकरेंट लिस्ट रे अछि 52 आइटम जोथरे मिसिग्री तो ये कहउची भाई स्टेट लिस्ट माने जो 61 आइटम्स अछि एइथरे पार्लियामेंट केते रे ये करि परिबो ना जते बेले इंटरेस्ट ता कोन थियो बिले नेशनल इंटरेस्ट थिबा आउ गोटे भी अछि बिले आर्टिकल 249 जो थे राज्यसभा जदि परमिट करेदेला है ना तो ये हो 249 तो सेटा गोटे अच्छे गोटे राज्यसभा जो अलाउ करदो सेटा भी हो पारे बिकॉज राज्यसभा प्रेजेंट कर कौन हाँ कौन कहला कनकरेंट रे 52 टा कनकरेंट रे थिला 47 सेटा पांचटा एठू ट्रांसफर हे गेला सेपडू 52 हे गेला हला सो ये होची यार आंसर हवा ठीक अछि फोर्थ क्वेश्चन को आसी बिले क्वेश्चन नंबर 4 हियर इट इज which of the following acts formally introduced the principle of elections for the first time principle of election for the first time की introduce करला बिले पार्लियामेंटर रिफॉर्म बिले जोटा को इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहा जाए एटा पार्लियामेंटर रिफॉर्म भी कहा जाए एटा ही फॉर्मली फर्स्ट टाइम इलेक्शन प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस करिथिला एटा तो माने मन रखियो ठीक है दायर की होची 1919 जो एक्सपांड हला येटा सेटा भी 1919 सब किछि 1919 ठीक है वेरी गुड बहुत बढ़िया सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को प्ले तो द क्वेश्चन इज हां सबू तो राजेंद्र होची इट इज चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी was formed on को डेट रे ड्राफ्टिंग कमिटी फॉर्म हेतला कोडी फटाफट हां
August 29, 1947. Very important date guys. से मैंने सबमिट केबे कले फेब्रुआरी केते 21 फेब्रुआरी टी देखिलो 22 फेब्रुआरी 1948 ये दीटा डेट वेरी इंपोर्टेंट भाई ड्राफ्टिंग कमिटी हैज हाउ मेनी मेंबर्स had how many numbers 7 जन मेंबर थिले पिले एंड यार चेयरमैन किए थिले चेयरमैन थिले बी आर अंबेडकर हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गाइस ओके सो ये होची यार आंसर 5 नंबर क्वेश्चन गला 6 नंबर क्वेश्चन को आसी हियर इज द 6th क्वेश्चन गाइस क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन देइछि जे द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान 1946 What were the features of the scheme? A scheme रो कौन feature थिला कौन feature थिला देखिलो कहलो 1 seat was allotted for every million people yes for 10 lakh people जणे अच्छा voting was to be by the method of proportional representation tomorrow by means of single draw yes this is also true the representatives of the princely states were to be nominated by the heads of the principles. This is also true. So answer is all of them. Next question को चलो. Okay, next question bile next question and the question is constituent assembly adopted national flag केबे अडॉप्ट करथिला बले जुलाई 22 1947 थिला है ना तो ये ठीक अछि constituent assembly adopted national anthem 24 जनवरी 1950 ठीक अछि 26 जनवरी फाइनल सेशन हेतिला ना 26 जनवरी 1950 को फाइनल सेशन हेतिला दिस इज ट्रू एटा इज ट्रू बिले ठीक अछि এই জিনিসটা চেক করার 24 জানুয়ারি না 26 জানুয়ারি 24 জানুয়ারি 1950 না 26 জানুয়ারি 1950 এইটা দিয়ে কনফার্ম করো তুমি বুঝিবালানি ইট ইজ অল अबाउट কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি তুমি জানিছো কি 26 নভেম্বর 1949 को फाइनली মানে অ্যাডপ্ট করনেলে बट यांकर फाइनल सेशन आउ दिन हेतिला सेटा हो 1950 को हेतिला हला 1950 रो 26 जनवरी ना 24 जनवरी सेटा मो 50 24 जनवरी ओके सो 1 आउट 2 हे जबो यार आंसर 24 जनवरी एटा 26 नै एटा 24 हबो एटा होची इंपोर्टेंट बिले एटा मने रखिबो डन बहुत बढ़िया सो ये होची यार आंसर हला नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस Professor K.C. Ware said that our constitution is at most कौन क्वासी फेडरल कोजाई फेडरल ये क्वासी फेडरल कोजाई केसी वेयर कहितले मने रखिबा एटा को क्वासी फेडरल मान्य कोन ना फेडरेशन ना यूनिटरी स्ट्रक्चर क्वासी फेडरल हला ठीक अछि वेरी गुड आ 9th क्वेश्चन को जिबा हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाउ इट इज वेयर देयर आर देयर नहीं वेयर देयर आगरु केतरा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हेला हमरो 1950 26 जनवरी को सेही दिन रे जदि देखिबा हम कॉन्स्टिट्यूशन थिला लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो दिरे गोटे प्रीएम्बल थिला राइट आ कोन थिला पले 395 टा आर्टिकल थिला ता सहित 22 टा पार्ट्स थिला आ 8 टा शेड्यूल थिला वेरी गुड तो यार आंसर हे जिवो 395 ओके 10 नंबर क्वेश्चन which of the following are correctly matched कोटा कोटा करेक्टली मैच कराई कमिटी को नहीं की स्टेट कमिटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स स्टेट कमिटी जवाहरलाल नेहरू यस प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल ड्राफ्टिंग कमिटी बी आर अंबेडकर रूल्स प्रोसीजर कमिटी स्टीयरिंग कमिटी सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव सब गुडा को ठीक अछि ठीक है जी वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो टिके देखिबा 12 नंबर क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन जो देखिबा द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज स्टेप अप अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ तो
Constituent Assembly फाइनली जदि कहबा दिस इज द कैबिनेट मिशन फर्स्ट टाइम जदि देखिबा 1934 एमेंड होय 35 को हमर आईएनसी डिमांड कला 1940 को आसिला अगस्त ऑफर फेल 1942 क्रिप्स मिशन फेल फाइनली 1946 कैबिनेट मिशन एक्सेप्टेड चलो नेक्स्ट वन So the question is, which of the following word has not been written in the preamble of हम preamble ले sovereign socialist democratic अच्छी but Indian कथा कोईटी लिखा जाए नहीं we the people of India लिखा है जी Indians लिखा जाए नहीं right अच्छा एवढा केमती लिखा है जी ना ट्रिपल एस डी आर एटा भी सीरियली पचारे sovereign socialist secular democratic republic socialist secular और socialist दीटा वर्ड हमर को अमेंडमेंट रा ऐड हेतला बेले 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे ऐड हेतला मन रखिबो समस्ते तो इंडियंस अब आंसर यार ऑप्शन डी सेमिति हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा इंटीग्रिटी तीनटा वर्ड ऐड हेतला ना क्वेश्चन को पढिबो ठीक से जेतेबेले भी ए क्वेश्चन आछि ना ए क्वेश्चन को पढिबो ठीक से क्वेश्चन देइछि कोन क्वेश्चन एरिया देइछि कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज पास्ड एंड अडॉप्टेड पास कले अडॉप्ट कले कोटा 1949 26 नवेम्बर एनाक्टेड जदि पचारिबो इंडिया केबे एनाक्ट कला तो इंडिया एनाक्ट कले तो ये होची कथा कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहि कि वर्ड लिखि 1950 जनवरी 26 कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन द फिलोसॉफी अंडरलाइंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एम्बॉडीड क्वाइट अर्ली इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन व्हिच वाज मूव्ड बाय 13 दिसंबर रे जवाहरलाल नेहरू एटा कोन करथिले मूव करथिले जोटा फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केबे पास करै देला बेले 21 जनवरी ना 22 जनवरी 22nd जनवरी 1947 को ऑफिशियली एक्सेप्ट करथिला तो यार आंसर होची जवाहरलाल नेहरू ये होची 22 जनवरी से होची 22 फरवरी आ 29 अगस्त कोन 29 अगस्त और 22 जनवरी 22 फरवरी सेटा 21 तो 22 कहलो सेतेबेले मु 21 लिखि दिली आ बने भूल भाल लिखि दोची ए तो मन ठीक ठाक कोए जो ड्राफ्टिंग कमिटी कथा पड़थिला अयो यो टिके बेले मु कोउडी गुडे भूल लिखि देथिले सेटा टिके देखि दबा एटा बाईस हजार 21 हम ठीक है 21 लिखी थी मैं 22 करती कहा कथा रे ठीक है हुए हुए सेमती गोटे गोटे हम बट 21 22 दिटा जगह मन रखिबो हला ओके हमें केते नंबर दिले पिले एटा ये नहीं 13 नंबर हे गला ना 15 नंबर थी 16 नंबर को दियो पिले 16 नंबर क्वेश्चन so the question is which statement is not correct in case of sovereign India case रे कोटा ठीक नहीं बोली कहूची India is not dependent yes India is not a colony yes India can give any part yes but India is obliged or obey even in its internal matter आज कौन पॉलिसी बनेबो कौन करियो यूएन को थोड़ी पचार सोवरेन रो अर्थ दीटा इंडिया इज नॉट अंडर एनी डोमिनियन और इंडिया इज फ्री टू डिसाइड एनीथिंग तार इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर को डिसाइड करि परिबो तार मीनिंग होची सोवरेन अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन को जिया पले द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी डन बाय 2/3 मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट इन द इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्य सभा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आर इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम कोटू इनकॉर्पोरेट करा गला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका पिले अमेंडमेंट विथ तमरो जो इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा दीडा जाको साउथ अफ्रीका कथा तो एटा साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन दु भूलभाल करिवो नाही अमेंडमेंट कथा साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक नेक्स्ट वन बिले सेक्युलर अर्थ कौन सेक्युलर अर्थ होची ऑल रिलीजियंस आर इक्वल इन द आईज ऑफ द
गवर्नमेंट आखिरे सबु धर्म समान आ सबु धर्म को से इक्वल प्रोटेक्शन दबो बोली सेटा देछि एटा होछि यार आंसर है जो ऑप्शन ए ओके नेक्स्ट को जे 19 नंबर क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की नोट किए कहितिले अर्नेस्ट बार्कर मने रख बिले एगुला भूल भाल करिवो नाही केसी वेयर क्वासी जुडिशियल सॉरी क्वासी फेडरल ये अर्नेस्ट बार्कर कहितिले की नोट एमती हार्ट एंड सोल बी आर अंबेडकर तो एगुड़ा सब मने रखिबो समस्त ठीक अछि तो यार आंसर इज वो अर्नेस्ट बार्कर की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल द लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल सिविल सर्विस ये पूर्व वर्ष एग्जाम रे आस्तिला एटा होची ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन बट यदि प्रीएम्बल कांसेप्ट कथा पचारिबो दैट इज यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इवन प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली प्रीएम्बल वाला कथाटा आउ को देश भी गोटे थिला फ्रेंच ना के फ्रांस बोले से माने ताठो भी बोरो करथिले हां चलो नेक्स्ट को जियो were the members of the drafting committee of the constitution अच्छा पहले मु जो कहूतली सेतिर आउ किछि पॉइंट्स ऐड कर दियो तमन जो चाहिबो ए जो अर्नेस्ट बार्कर बलिया आउरी केते जिंसो जेमिति स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा को स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन खाली प्रीएम्बल लेखो प्रीएम्बल तळे लेखो की नोट अर्नेस्ट बार्कर स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अंबेडकर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट जवाहरलाल नेहरू ऑनलाइन रे पिले जो माने सुनुचो यूट्यूब रे लिखि दियो एटा क्वेश्चन ने केबे केबे आसी जियो परे मते थैंक यू कहबो हला फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राजेंद्र प्रसाद कहितिले डिक्लेरेशन ऑफ द इंटेंट जवाहरलाल नेहरू कहितिले डन फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राजेंद्र प्रसाद कहितिले द की टू इंटरप्रिटेशन किए कहितिले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया soul of the constitution guys soul of the constitution this is important heart and soul is article 32 only soul is the preamble of Indian constitution soul of the scholar माने कहथिले सेमती पर्टिकुलर नेम नहीं soul भी कहा जाए and the last scholars गुडा कहथिले scholars of historians अच्छा philosophical framework भी कहा जाए याको philosophical framework एटा कहितले बिले एचएम सिवाई फ्रेमवर्क आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कह जाउछ समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कह जाउछ वेरी गुड बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन बिले एने पालकी वाला सेटा भी लिखि दियो बिले आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एन ए पालकी वाला ठीक है जी जेतेबे पढुछो बिले ई वाला जिंस गुडा को टिके नोट करी करी चलो साइमल्टेनियसली सो दैट एग्जाम रे आसिले हम आराम से कहि परिबा 21 नंबर क्वेश्चन को 100 टा क्वेश्चन अछि हला टिके स्पीड जिबा हु अमंग द फॉलोइंग वेयर द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द अरे कहार वेटिंग अछि इंडिया ना श्रीलंका काटे वेटिंग मोर मने वाला खेलटा थिला खाली कार वेटिंग देखला when the following were the members of the drafting committee तो देखला ड्राफ्टिंग कमिटी रे मन को भीतर के मेंबर थिला इंडिया वेटिंग आ कोन देखियो छाड़ मोहम्मद सदउल्ला थिले की मोहम्मद सदउल्ला थिले ना ऑब्वियसली जवाहरलाल नेहरू केबे न थिले एंड माधवराव वाज देयर एचसी मुखर्जी इज नॉट देयर तो भाई 1 and 3 हला हां पिले जने ए जो एचएम सिबाई पिले सुनो किए थिले बी आर अंबेडकर चेयरमैन गोपाल स्वामी आयनगर गोपाल स्वामी हला अल्लाडी कृष्णा स्वामी आयर के एम मुंशी ये जो मोहम्मद सदउल्ला एन माधवराव रिप्लेस्ड बाय बीएल मित्तर टीटी कृष्णमाचारी डीपी खेतान बस एतकी जण थिले डन वेरी गुड चलो आगो को बढ़ी जा नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
देखो भाई सॉस कोई के मन रखंदी हमें सॉस हमें तो पीएम ऑफ ओल्ड कौन गोटे ओल्ड पीएम और टीयर ऑफ ओल्ड पीएम सॉस माने फर्स्ट आउची फर्स्ट कौन सैलरी सैलरी ओथ आउ सीट हैला सीट ती ये होछ 2 3 4 2 रहउची सैलरी 3 रहउची ओथ थर्ड रे सीट होची फोर्थ रे तो फोर्थ रे कौन थिला बेले allocation of the seats council of the states माने राज्यसभा ओके schedule tribe कथा कोठी मेंशन हेची 6 रे माने एमटीएम वाला आसाम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम 5 रे भी अछि शाबाश पंचायत राज सिस्टम जदी 11 एंटी डिफेक्शन 10 नेक्स्ट वन प्लीज social and yes now what is the purpose of inclusion of dpsp देखो तुमको जदी नॉर्मली कहबो जदी हम देखिया पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रमोट किए करछि योर फंडामेंटल राइट्स बट इकोनॉमिकल और सोशल कथा जदी पढियो दिस इज द थिंग सो आंसर कोन जे बोले टू एस्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को ये करछि यस नो वेरी गुड नेक्स्ट वन जीवा बोले Okay, जी हाँ now which of the following come both in the jurisdiction now protection from violation of the constitution अच्छा dispute between central and state supreme court protection of the fundamental rights रे दी जन रीट इश्यू करछंदी अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट 226 हाई कोर्ट्स तो दीटा इज तुम्हारा आंसर अच्छा नेक्स्ट को जीवा which part of the constitution makes provisions with regard to electoral system in India इलेक्शन कथा कोडी मेंशन है भाई 15 पार्ट 15 14 रे परा पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ओपीएससी तो कोड रहइबो जे हां शाबाश 324 नहीं ना 325 रो 29 इलेक्शन तो 24 इज देयर ना एस्टैब्लिशमेंट अच्छा ठीक कहि दिल डाले चलो नेक्स्ट को जीवा now which of the following reads is also known as awakening call awakening call awakening माने wake करियबो जगेइबो काम करूनु काम कर सेटा कोउटा मैंडामस कमांड दबो सी सुई पड़छ रे भाई उठ मन रखिलो हां जदी पुलिस स्टेशन जाई छ एफआईआर लेकुनी कोर्ट ऑर्डर दबो मैंडामस ताको जगेइबो तू उठ रे भाई तू एई पई बइछु तो ये होची कथा तो एमती मन रखियो awakening call माने ये होची मैंडामस हैला प्रोहिबिशन तमे जानछ टू फॉरबिड सर्चियोर माने टू सर्टिफाई क्यू वारंट माने ऑन व्हिच अथॉरिटी हेवियस corpus टू एवर बॉडी ऑफ शाबाश नेक्स्ट वन कोन हैला आजी भलो क्वेश्चन आउ के बोलो न तई भल लग जाछ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ओके तो 1934 हमें कहितले ना फर्स्ट टाइम बाय 1934 रे जदि देखियो ऑफिशियली हमें देखितले एमएन रॉय होचते फर्स्ट टाइम डिमांड करथिले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गत ठीक अछि 28 नंबर क्वेश्चन कंसीडर करो चेक करो आ आंसर को कोडा ठीक कोडा भूल एमएन रॉय 1935 भी बहुत जगह रे लिखि छै 35 हो मानुसन जेमती हो तो दीजिए क्वेश्चन seats allocated to each province were divided among Muslim, Sikh, Anglo-Indian, Christian ଆଉ general हां कि नहीं दिए कहलो तीनटा थिला ना कौन कौन थिला तीनटा कहलो मुस्लिम सिख एंग्लो इंडियन थिले एमती एंग्लो इंडियन कोड अछि सो फर्स्ट रॉन्ग अछि फर्स्ट रॉन्ग है गेला चलो assembly was chaired by Dr. Rajendra Prasad when it met legislative G.B. Mavlankar hela the chairman of the provincial constitution committee provincial कथा सरदार वल्लभ भाई पटेल 3 only ठीक अछि अरे कहा कहा भीतर डिस्ट्रीब्यूट हेतला सिख मुस्लिम और जनरल 3 जन को भीतर शाबाश नेक्स्ट क्वेश्चन the members of the constituent assembly were partly elected partly nominated
elected by the legislatures of various provinces nominated by the rulers of the princely states. Option C is the right answer. ठीक इलेक्शन केमती होतला डायरेक्ट इलेक्शन नहीं जो इलेक्शन जोटा हां इनडायरेक्ट इलेक्शन तो छाड़ आ गुड होची प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. से कहे who among the following was the constitutional advisor. बी एन राव थे एडवाइजर. ठीक अछि ओके शाबाश. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. Yes. Now, how many seats were allotted to British India and to the princely states? अच्छा भाई 389 रो प्रोविजन थिला. 389 रो पिले 296 आउ 93 रो प्रोविजन थिला. 296 93 296 रे पुनी 292 को 4 वाला सिस्टम थिला. मो आखि ऊपर में लिखि देली देखि दबा हला 292 को 4 मो अछि माने जेतेल तुम डाउनलोड करियो पीडीएफ सेतेल मु भी दिबी माने सेही पय फोटो लगी दैछि मु. फोटो किछि प्रमोशन नाही मो सर अनै जने पढ खोलला छाडी जाई परियोनी हैला बुझि बजो तबले ए पीडीएफ मिलि जो समस्त को पीडीएफ विल बी देयर. हस्कुलिया पिलाटे नाही आंसर कोन बोले 296 होची ब्रिटिश इंडिया 93 होची प्रिंसली स्टेट्स. चलो नेक्स्ट को जीवा. Now the Indian Federation होची यूनिटरी बायस जो होची एटा होची कैनेडियन. तो कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन रो हमें बेस्ड ऑन कैनेडियन पैटर्न हो तो एटा मन रखियो समझते हम फेडरेशन टा. अच्छा नेक्स्ट वन. The Indian parliamentary system is different from British parliamentary system in that India has India रे कोन अछि आराम से पढ़ी के कहलो कोडा आंसर हो. The system of judicial review is there. Hello? Na. System of judicial review is there. ताकर भी भाई nominal real head अछन ना नहीं ताकर हैं. A system of collective responsibility अछि ना नहीं. Bicameral legislature ना नुहे सबु system of judicial review हमें कोड नहीं थिले यूएस. ये हो आंसर. नेक्स्ट वन मिले 34th. तो कॉन्करेंट लिस्ट हमें कॉन्करेंट लिस्ट जॉइंट सिटिंग एगुडा सब कोड नै छु आउ लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल सब हमें ऑस्ट्रेलिया रो नै छु. अच्छा ठीक अछि. द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज कंसिस्टेड ऑफ एटा बहुत सहज समस्त ठीक कर दबो. लोकसभा राज्यसभा को प्रेसिडेंट आर्टिकल पार्लियामेंट रो आर्टिकल होची 79 राज्यसभा होची 80 81 52. शाबाश. नेक्स्ट वन बोले. The question is free and compulsory education to all children 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ age was made fundamental by 86th constitutional amendment act 2002 जोथिरे तीनटा पार्ट रे ऐड कराइतला. 3 रे 21A पार्ट 4 रे 45 पार्ट 4A रे 11th फंडामेंटल ड्यूटी. अंडा लगुजी ठीक है सर अरे बढ़िया दो ठीक है सर तुम ठीक जगह रहो. Which among the following schedules related to the responsibility of municipality 12 आइटम केतरा अछि 18 11 टा होची पंचायत बिले पंचायत रे होची 29 टा 10 टा एंटिडिफिकेशन 9 टा होची 9th शेड्यूल ऐड हेतला बेले फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे. तापर तमरो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तापर तमरो 73rd और 73rd और 74 ठीक अछि. Which of the following right is available to both foreigners and Indians? Both foreigner and Indians. खाली Indian citizens को मिलुची कोडा 15 16 19 29 30 हैला मन रखिबो. या बादे जोडा बोथ को मिलतबो या बादे बोथ जोडा लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 समस्त को मिलुची भाई. बाकी रे देख दियो. अच्छा राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड 15 हैला. राइट टू इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी 16 प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज 29 29 ना 30 लैंग्वेज कल्चर हाँ 29 एजुकेशन 30. चलो भाई नेक्स्ट
एटा ओनली इंडियंस मन को मिली 15 16 19 29 30 ओनली इंडियंस को ऊपर इंडियन सिटीजन को ऊपर लागू बाकी को ऊपर लागू नहीं एटा हैला अच्छा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट आर्टिकल 48 ए आर्टिकल 48 है वेरी गुड को अमेंडमेंट रे ऐड हेतिला ना डायरेक्ट थिला 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वेरी गुड बहुत बढ़िया नेक्स्ट वन चलो व्हाट इज योर नेक्स्ट वन ऑब्वियसली एटा बहुत तरह आसलानी तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन बेसिक स्ट्रक्चर होची आज टेस्ट रे पके दिल ना केशवानंद भारती केस 1973 ओके द कांसेप्ट ऑफ डीपीएसपी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ठीक सी नहीं थला स्पेन सी जोड़ना हम जोड़ने ले बोडो टोकरी में इतनी सांतली बिले 92nd अच्छा सेतना में डिस्कशन करतले बोदे 8 शेड्यूल ले जो 3 थर रे ऐड है ना फास्ट कोटा ऐड हेतिला बिले खाली ओनली सिंध तापर 3टा तापर 4टा तो फास्ट को अमेंडमेंट 24th ना 21st अमेंडमेंट देखिलो ठीक है ए 3टा वेरी इंपोर्टेंट ना 21st अमेंडमेंट तो 21st रे सिंध तापर 21st 71st आउ 92nd हाँ फास्ट रे सिंध तापर कोंकणी मणिपुरी और नेपाली तापर बीडीएमएस बोडो डोगली मैथिली संताली हो हैला ये होची 21 ये होची 71 ये होची 92 वेरी गुड हु इलेक्ट्स द स्पीकर ऑफ लोकसभा members of the Lok Sabha शाबाश नेक्स्ट वन से कहि जे विथ द फॉलोइंग अमेंडमेंट पास ड्यूरिंग द इमरजेंसी टाइम रे की थिला 42nd है ना सेते कोन लागू हितला इंटरनल इमरजेंसी थिला एक्चुअली सेटा थिला इंटरनल डिस्टर्बेंस कोइ की 44th अमेंडमेंट कर देला आर्म्ड रेबेलियन because which of the following article prohibits the consumption of intoxicating drinks and drugs है ना ठीक है जी तो ये होची 47 सही बढ़िया 46th क्वेश्चन which schedule contain the provisions regarding administration and schedule administration of schedule 5 रे अछि नॉर्मल और 6 रे अछि असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम शाबाश नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज which of the following election is not conducted under the supervision of election commission of India very good देखो भाई election commission of India एमएलए गुडा कर इलेक्शन करियो एमपी वाइस प्रेसिडेंट राइट बट पंचायत और म्युनिसिपालिटी कथा जदि देखियो हां मो एटा पंचायत देखिली ठीक है चलो नेक्स्ट वन several features of the constitution of India have been borrowed from different sources which of the following is not a correct match in the context फेडरल स्कीम में 35 नीचे ठीक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ना कौन कर लिस्ट होची ऑस्ट्रेलिया है ना यूएस रो फंडामेंटल प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ होची जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन लुची जाई छी ठीक है ना बाहर रे हां हां फेडरल स्ट्रक्चर हमरो माने इंडिया केमिति तो सेटा होची तमरो कैनेडियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अरे कैनेडियन जेमति अछि हमर सेमति 9th होची फर्स्ट अमेंडमेंट हैला 51 बहुत बढ़िया 50th क्वेश्चन को आसीबा द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 इज एसोसिएटेड विथ वन मेजर चेंज दैट प्रोपगेटेड द ब्रिटिश एजेंडा ऑफ डिवाइड एंड रूल हां दैट इज सेपरेट इलेक्टोरेट थिला तो ये होची मोरलेमेंट रिफॉर्म्स थिला हैला 50टा क्वेश्चन हैला 50टा क्वेश्चन जीवा ठीक अछि हैं जीवा न सारीवा नियति एंती केनते जेबानी एरा कोए फटाफट एटा जाना नहीं एक्चुअली पूर्वतर भी एमती क्वेश्चन आसी ओडिसा पुलिस रे जानछो यूएन रो पचार तो मन रखि थाओ खाली पार्ट 3 बोली हैला पार्ट 3 मन रखि थाओ एटा हो जे विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजेबल्स द स्टैंडर्ड सेटिंग हमर जो फंडामेंटल राइट्स ता अछि सेटा पार्ट 3 रे अछि हमर ए जिंसरा कोठु अछि सेटिंग चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स
तो ह्यूमन राइट्स बाय फंडामेंटल राइट्स तमे रिलेट करनबो से हिसाब रे तो आंसर हे जिवो हमर पार्ट 3 रे हमर कोन अछि फंडामेंटल राइट्स जोटा कि एटा को रिजेंबल करूची 52nd क्वेश्चन को जीवा एंड हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस responsible to the कहलो फटाफट ना हमर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अछि एथिरे एग्जीक्यूटिव इज रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेचर एंड यदि एग्जीक्यूटिव रो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कथा पडियो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 75 क्लॉज 3 गाइस एही हिसाब रे एमाने लोकसभा को रिस्पांसिबल हैला काइना कॉन्फिडेंस कोठी जितिबे लोकसभा रे हैं तो आंसर इज जो तमरो लोकसभा नेक्स्ट वन बोले who was the interim president of the first constituent assembly interim president first constituent assembly jodi कहला that is Sachidananda Sinha Supreme Court of India was established on the recommendation of regulating act of 1773 रे सेट अप हेतिला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ठीक नेक्स्ट वन वेरी इंपोर्टेंट गाइस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 42nd अमेंडमेंट रे ऐड हेतिला यस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ठीक है चलो 14 आर्टिकल सॉरी पार्ट 14A when the following functions as the chairman of zonal council ro kiye pile yes very good this is the union home minister जो माने जोनल काउंसिल ला चेयरमैन हिसाब रे ला जोनल काउंसिल ला पांचटा जोनल काउंसिल अच्छा नेक्स्ट which article of Indian constitution says that parliament has the power to make laws on any matter in the state list if a proclamation of emergency is in the operation कौन है आंसर 256 states about the power of the parliament to legislate concerning any matter in the left of आर्टिकल 250 हो बोले एटा 249 नहीं तो 250 हो आर्टिकल हां ठीक है मन रखो आर्टिकल 250 नहीं आंसर है हैला आर्टिकल 250 states about the power of the parliament to legislate concerning any matter in the state list if the proclamation of emergency is in operation article 50 250 guys हैला मन रखतो जेतोले इमरजेंसी लागू हितियो सेतोले स्टेट लिस्ट रो जो आइटम गुडा अछि ता ऊपर लॉ किए बनेबो पार्लियामेंट बने पारि सेटा को आर्टिकल हिसाब रे 250 आर्टिकल हिसाब रे हैला मन रखियो चलो नेक्स्ट को जीवा हैला which amendment states that the total number of ministers including prime minister in the central council of ministers shall not exceed 15% को amendment थिला बेले ना 91 91st constitutional amendment 89 न नथला 89 1989 61st constitutional 1989 voting जो एज सेटा 1989 ईयर एटा होची 91st constitutional amendment act पहिले 2003 रो जो थरे ये कैपिंग कर देइतला कोना भाई मैक्सिमम 15% मैक्सिमम हैला and the next one guys which article of the Indian constitution has the provision of finance commission होची हमरो 280 they in the following situation ad hoc judges are appointed in the supreme court को सिचुएशन ने पहिले ad hoc जज कथा पडिछि ad hoc माने टेम्पोररी हां एग्जैक्टली कोरम जेतले हाउ नथबो सो जजेस टू होल्ड एनी सेशन भाई जति मिनिमम जज दरकार तांको ये करिया पई जदि सेटा ही अवेलेबल नथो तो कोन हो कोरम कथा तुमे ये हाउस रे सुनिथिबो केते 1/10 या 10% वेरी गुड नेक्स्ट वन इंक्लूडिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर ना एक्सक्लूडिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर इंक्लूडिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर which article of Indian constitution gives the power to the government to make special provision for the development of SC ST OBC आर्टिकल 15 अच्छा अगेंस्ट आर्टिकल 15 कहूची पहिले अगेंस्ट आर्टिकल 15 माने कोन कहले 15 ने कोन अछि डिस्क्रिमिनेशन नो रिलीजन कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ आउ ये तो एठी देखो हैं एससी एसटी ओबीसी रो जो ओबीसी एससी एसटी एमानकर कोठी रिजर्वेशन 16 रे आर्टिकल 16 बिले
आर्टिकल 16 रे कोन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सेइतरे तो भाई एमान को दिया होछ ना रिजर्वेशन तो एटा तो ता अगेंस्ट रे पळे गला यू नो आर्टिकल 16 नन ऑफ दिस अवर आंसर ये रहला नेक्स्ट वन कौन हम ऑप्शन ए हम एनीबॉडी कैन मूव टू द कोर्ट ऑन समवन्स बिहाफ होची पीएल पीआईएल जो थाए बिहाफ तो लोकस्टैंड रो अर्थ होची कोर्ट सुनिबो तुमको हैला लोकस्टैंड रो एक्चुअल मीनिंग होची द राइट टू ब्रिंग एन एक्शन or to be heard in a court or to address the court on matter before it हैला तो एटे ऑप्शन रे आंसर नहीं a person whose rights are infringed alone can move to the court आइए से एटा ही परिबो ऑप्शन बी ही परिबो एटा टिक देखियो बोले चेक करियो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस बट लोको स्टैंडिंग रो मीनिंग होची या टू बी हर्ड इन अ कोर्ट तो ऑब्वियसली एटा ही थिबो जार इन्फ्रिंज हेगला ताको कोर्ट रे सुनिया दरकार ठीक हैला अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज द अटॉर्नी जनरल अंडर व्हिच आर्टिकल 8 148 होची सीएजी भूलभाल कर हु इज द एज अटॉर्नी जनरल नाउ वेंकट रमण बेले बहुत बढ़िया तो टू बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज द अटॉर्नी जनरल a person must possesses the qualification prescribed yes जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रो जो रहइबा दरकार क्वालिफिकेशन तांकर से रहइ दरकार बिकॉज़ ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया तो लॉ ऑफिसर माने सुप्रीम कोर्ट रो ही पावर माने सुप्रीम कोर्ट रो क्वालिफिकेशन रहइबा दरकार नेक्स्ट Deji, which of the following statement are correct about the governor? Chief executive head of the state. Yes. है ना? Governor acts independent. No. One person can be appointed governor only one state. No. Seventh Amendment आज ही पढ़ दिलो तो मैंने आज क्लास रे. Governor is not a titular head. Yes, he is the titular head. तो आंसर इज वो. है ना? Next one please. आसिल ऐसे क्वेश्चन जोड़ा डिस्कशन है गला 72 रो कौन अछि पार्डनिंग पावर 74 काउंसिल मिनिस्टर टू ऐड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट 68 रे कौन अछि माने अछि हां वाइस प्रेसिडेंट कौन कोड थिबा चल आगो बढ़ी जा द प्रेसिडेंट काउंसल्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हाइल अपॉइंटिंग द जजेस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट यस गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न स्टेट जजेस मन को कला बेले स्टेट हाई कोर्ट रो सेते बेले गवर्नर को कंसल्ट करिवे नेक्स्ट वन प्लीज Constitution of India guarantees which of the following to the states of India? Sovereignty दउची इंटीग्रिटी भी नहीं किछि दउनी से पावर नथिंग इज देयर हम आबे की देखो ना टेरिटोरियल इंटीग्रिटी अछि आंकर काली की चाहिले अदा भंगा भंगी करी जोड़ा जोड़ी करी सोवर्निटी माने फ्रीडम इंटरनल मैटर एक्सटर्नल मैटर डिसाइड करि परिया सो सेंटर तो इंटरफेयर रहउची ए भीतर राइट टू सिसेड फ्रॉम द यूनियन माने बाहर जीवा बाहर चल जो चाहिले इंडिया रे बाहर जो चांस नहीं नाउ नेक्स्ट वन भाई which article of the Indian Constitution provides for vice president of India vice president होची 63 तो पक्का वेरी गुड 63 impeachment 61 62 रे भी प्रेसिडेंट करो कोन कोड अछि आर्टिकल 65 आज कोन पढुतला 65 कोन थिला आर्टिकल 64 थिला एक्स ऑफिशियल चेयरमैन 65 कोन थिला बेले फटाफट को हां discharge the function of the president while the president's office vacant था ये तो what can be the maximum number of members in the state legislative assembly of the state maximum 500 minimum 60 no अच्छी exception अच्छी for removal of a governor from office the president seeks advice from pleasure of the president आज ही बोल दिला बरा pleasure of the president president चाहिले
रखि पारे वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील the functions of which of the following body in India are limited to advisory nature in advisory nature खाली पक्का तो पक्का राज्यसभा लेजिस्लेटिव काउंसिल अच्छा ये कहछि फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इन इंडिया आर लिमिटेड टू राज्यसभा केमिति लिमिटेड हे गला राज्यसभा रे तो केते सारा पावर अछि ना इट इज द लेजिस्लेटिव काउंसिल गाइस जो स्टेट जो विधान परिषद अछि को काम को न से माने बुझि परछ तो कोन भाई रखंदी बुझापन नहीं नहीं अच्छी अच्छी काम अच्छे को काम को न कहि देले परिषद वाला रागी जीवे पुनिया मो ऊपर हैला अच्छा which of the following is or are qualification to be appointed as the governor of the state citizen of India was दरकार yes qualification not be the resident of the state in which she works as the governor should have completed age of 35 yes हमें कहि परियो 1 and 3 तुम कहो सर 1 2 3 काहे कियला 2 is not mentioned in the constitution qualification रे किछि मेंशन ही नाही बाय कन्वेंशन माना जाउची एया कॉन्स्टिट्यूशन खाली एया कहछि सिटीजन ऑफ इंडिया इज दरकार 35 इयर्स एज दरकार इवन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कथा भी से लिखिनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रेसिडेंट हे नथिवा दरकार एगुडा कन्वेंशन हिसाब रे मानना चली छि एई बडा हिसाब रे चली छि बट दैट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैला नेक्स्ट वन प्लीज आर्टिकल 157 है कौन एते बोटे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया mandates that the state may reserve any post or appointment in favor of any backward citizens who are not adequately represented in the services under the state who decide whether such class of citizens is adequately represented or not किए decide करे बोले कहलो backward classes को तो decide किए करछि इट्स द स्टेट कथा कहछि ना स्टेट निजे डिसाइड करछि द स्टेट ऑब्वियसली गवर्नर नहीं इट इज द स्टेट स्टेट डिसाइड करछि एटा स्टेट ऊपर पावर दिया ही नहीं तरा तमे जानते हो सबले स्टेट को ही पावर मिलछु ओबीसी किए डिसाइड करिबन स्टेट को पावर दिया छि ना लाइक दैट ओनली ओके नेक्स्ट वन पे The power to declare an area as scheduled area lies with scheduled area declare करिया power president को पाखरे अछि बोले हैला एटा होछि president को पाखरे अछि ठीक अछि मुंडो गाइला जाउछि अच्छा नेक्स्ट वन बोले which of the following are the demerits of the presidential form of government रो demerits कोन कोन अछि को demerits what are the demerits पहले demerits पढिबा conflict between legislature and executive demerit कथा कहूची आगो बुझा presidential form of government रे executive is not responsible to the legislature conflict रहिबो कि legislature executive रे तो नुहे एटा non responsible government माने एटा डिमेरिट गोटे प्रकार कोठी कॉन्फ्लिक्ट रहइबो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर तांगर कोन रोल अछि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव रो कोन रोल लेजिस्लेचर सहित पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे एग्जीक्यूटिव इज रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेचर कॉन्फ्लिक्ट रहिबो का कर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर कोठ रहिबो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे एटा तोटा रहिबो ना प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमर तो हम तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छा non responsible government is there may lead to autocracy obviously भाई autocracy is होगा ना प्रेसिडेंट को पावर मिली छि अधिका अच्छा नैरो रिप्रेजेंटेशन obviously भाई नैरो रिप्रेजेंटेशन अच्छा 2 3 4 तो नहीं फास्ट को भी से मानी छि आंसर एक्चुअली 1 2 3 4 दै छि बुझो ठीक ना ना हबो माने बुझी पाला नहीं हां एमिति भाबो एटा जिंस को
जे एनसरेबल नुहे ना मु जदि एनसरेबल नुहे तम दी जन तो कॉन्फ्लिक्ट रहिबो ना जदि एनसरेबल हैला ताले कॉन्फ्लिक्ट न रही पारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे कॉन्फ्लिक्ट कम रहिबो कने से माने साइमल्टेनियसली मिसी काम करछंती एग्जीक्यूटिव इज रेस्पोंसिबल टू द लेजिस्लेचर झगड़ा घाटी हला बेलको से माने आ बाहर कर देबे कॉन्फिडेंस पकई बाहर कर देबे बट से केस रे रहिबो कि बाहर कर परिबे झगड़ा चली रहिबो या माने बुझि बोलो ना नहीं तमे भाबो इंडिया रो कथा इंडिया रो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पीएम से माने कोठु जाउछंती लोकसभा राज्यसभा रो है ना सही मिनिस्टर गुडा कोठु चूज करब जेउटु ताले क्वेश्चन आवर वगैरह रे एमाने पचारछंती नो कॉन्फिडेंस मोशन रे हटै देई पारछंती ताले एग्जीक्यूटिव रेस्पोंसिबल रहिला कॉन्फ्लिक्ट रहिबनी एग्जैक्टली बट यहाँ को भीतर नहीं किछि भाई सेपरेट कॉन्फ्लिक्ट रहिबो यहाँ को भीतर यार आंसर बिले 1 2 3 4 सब ठीक ठीक नेक्स्ट बिले हाँ एटा होची 143 हैला आर्टिकल 143 एटा होची तमरा एडवाइजरी आ ए एडवाइस ता माने होची बाइंडिंग इन नेचर नुहे अब्रेज इज वेरी हैप्पी विथ 143 कहले सर केते बेल कहिए से ना सर कहि चलेनी केते बेल कहले से कहि चलेनी 143 कहि चलेनी तमे अनुभव ना कोन चलो नेक्स्ट टोटली ई बुझी बाननी कोन अरे 143 कौन एक्चुअली से कहउछन से कहउछन सर 143 कहि देले आपण मु खुशी बहुत छाड़ से मोरे बुझिबो नेक्स्ट तुलसी पे कहउछन सर कौन हे गेला गोटे किसी बुझा पड़लानी किए है ना वेरी मच एक्साइटेड सी which amendment has provision for the reservation of 10% seats EWS पिले खाली तो 143 होगा से होची प्रॉब्लम हो सो आंसर इज 103 अमेंडमेंट हैला नेक्स्ट पिले who is authorized to increase the number of judges supreme court of india किए पार्लियामेंट टाइम टू टाइम डिसाइड करछि एबे केते जण अछन हमर 34 33 प्लस 1 नेक्स्ट वन स्कोर बोर्ड केते लानी है 79 केतरा केते केते ओवर 300 ऊपर मार दे अच्छा भाई विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्टेड ड्यू टू नेशनल इमरजेंसी हेले कौन कौन इफेक्ट पड़िबो सेंट्रल स्टेट रिलेशन ऑब्वियसली लाइफ ऑफ द लोकसभा फंडामेंटल राइट्स हां पडुची नेशनल इमरजेंसी पड़ले पडुनी सो आंसर इज सब हां ऑब्वियसली से टाइम रे से माने एक्सटेंड करिवे इलेक्शन ही हेई परियोनी से तळे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रो एमान के भीतर कोडा फीचर ना फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माने स्टेट पाखरे अधिका पावर फेडरल माने होची बुझो डिवीजन ऑफ पावर यस रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हेले फायदा अमेंडमेंट रहले स्टेट को लॉस गोटे प्रकार भाभी कि देखो ना तने ये जो ठीक कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुप्रीम होबा दरकार कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हेले ही फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये होबो डुअल गवर्नमेंट इज देयर सो 1 to 4 सो आंसर इज 1 to 4 ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम रहले जाय कि स्टेट को पावर मिलिबो ना स्टेट फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रो अर्थ कोन यांको अधिका टिके फ्रीडम मिलु स्टेट गुडा को है ना पावर ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन हो आ जदी रिजिड न जदी सुप्रीम न रहला सेंटर जहां चाहिए से करियो नेक्स्ट वन ब्रेक आर्टिकल 20 और 21 ना ड्यूरिंग इमरजेंसी को भी इमरजेंसी रे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को हटई हबो को अमेंडमेंट रे इतलाटा 44th अमेंडमेंट मन रखियो हला 44th अमेंडमेंट रे डिसाइड हितला जे आर्टिकल 20 और 21 को को भी केस रे तमे हटई परिबो नाही हला द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन
बहुत सहज सर पार्ट 4 ए स्वरण सिंह कमिटी रिकमेंडेशन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 11 फंडामेंटल ड्यूटी 11th फंडामेंटल ड्यूटी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एतिकी तो क्वेश्चन पचर जियो नेक्स्ट वन which of the following articles of Indian constitution contain the right to religious freedom कथा article religious freedom होची 25 रु 28 29 30 कौन तमरो कल्चरल एजुकेशनल राइट 32 होची रेमेडी इक्वालिटी रहले 14 रु 18 फ्रीडम रहले 19 रु 22 एक्सप्लॉयटेशन रहले 23 24 which article of Indian constitution abolishes untouchability 14 कौन इक्वालिटी बिफोर लॉ 15 होची डिस्क्रिमिनेशन 18 होची टाइटल एबोलिशन এইটা গোটে কথা एक्चुअली एटा गोटे क्वेश्चन जत्ते बेले ए ऑप्शन गुडा थिबो आंसर इज लीगल राइट व्हाई लीगल राइट बहुत बड़ स्कोप लीगल राइट भितर कॉन्स्टिट्यूशन भी जाउची फंडामेंटल भी जाउची सब जाइची मु जदी खाली कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन कहि देबी ताले सेटा कहिवाटा एते ठीक हबनी बट लीगल राइट कहिवाटा सबुटू अधिका ठीक हबो हैला ना मु तो देइनी जमा आज पर्यंत तरे भी वोट दे ना मते हां मु देइनी तो देबिनी मु इच्छा नै जेबे भलो लोक गोटे आसे ना मु वोट देबे नोटा दे कोन मु जाई के नोटा दे के कोन फायदा मु जीबिन टोटली काउंट हेबनी मोर नेक्स्ट मु दुखर विषय वोट हेला बेले मु कोठी कोठी अलग अलग जगह थाई वोट दे पारे ठीक है अरे व्हाट इज द नंबर ऑफ 12 शेड्यूल नेक्स्ट एटा कोटा कोऑपरेटिव सोसाइटी 97 कॉन्स्टिट्यूशनल को पार्ट रे छी को पार्ट रे नहीं पूरा निश्वास बंद कर देबे आंसर तो फटफट करके नेक्स्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द साइमन कमीशन कोठी जल्दी को कोठी साइमन कमीशन केबे आस्तला फॉर्म केबे हला आसीला केबे हां से तो क्वेश्चन तार रिकमेंडेशन ता 35 हैला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तारी सब्सिक्वेंट तापर 1935 आ 1935 रो अराउंड 60% फीचर गुडा को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे नेक्स्ट वन टुडे गो बैक साइमन अच्छा किए चल जाइतले सेतले शाबाश व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज बिले फंडामेंटल ड्यूटी शाबाश नेक्स्ट वन क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट और चेंज ऑफ नेम अरे जल्दी को कौन आंसर आप फर्स्ट शेड्यूल अच्छी कौन हाँ फर्स्ट शेड्यूल ले अच्छी कौन आर्टिकल केते को ताले फटो आर्टिकल 3 वेरी गुड न्यू जदी एडमिट करा जीवो वेरी गुड बहुत नेक्स्ट वन ले क्यों वारन कौन भाभी कहलो कोड आई तो आंसर यस टू बी सर्टिफाइड टू बी हर्ड टू बी सर्टिफाइड ये होची तमरो टू बी इन्फॉर्म्ड तो आंसर इज सर्सियोरारी ठीक है जी सो आंसर इज सर्सियोरारी हैं कौन कह देबी आर्टिकल 1 रे तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स कथा लिखा है ठीक अछि 2 रे अछि कि एडमिट करा हबो नुवा गुटे नुवा जोटा ऑलरेडी नाही इंडिया रे पार्ट में ठीक अछि हां पाकिस्तान में ना अलगा ऑफिस जोटा नाही हैला सेटा को एडमिट करिया 2 3 होची एग्जिस्टिंग टाको चेंज करबा भांगी देखी अलगा कर देलो मिसई देखी जोड़ी देलो से होची कथा ससुर माने टू बी नोटिफाइड देखो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट भितरे रिलेशन लोअर कोर्ट जा भी ऑर्डर देला सेटा ता पाखु को आसीया दरकार सी देखिबो टू बी सर्टिफाइड मु देखिबी तमे की ऑर्डर देइछो कोन देइछो तापर मु ताको चेंज करियर थिले चेंज करिवि नले टू बी इन्फॉर्म
ताको इन्फॉर्म करा जाऊ तो जेते आम रिट अपील ले जाऊँ सुप्रीम कोर्ट को लेट सपोज हाई कोर्ट रो ऑर्डर को आगे देखौ नहीं से देखुची भाई तुमरो सुनाई कि नहीं कौन शुणी से देखी मु इनफॉर्म हेबी ता विषय में जानिबी मु सर्टिफाई करबी तापर ठीक ना भूल कि कौन हेडा होची टू बी सर्टिफाइड ठीक अछि। अच्छा नेक्स्ट वन प्लीज फटाफट को कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हाँ ऑस्टिन ग्रैनविल ऑस्टिन वेरी गुड नेक्स्ट वन एक्सरसाइज ऐसे रस्तला शाबाश व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डायरेक्ट द स्टेट 29 अरे रो द क्वेश्चन मिसिंग अछि अन कौन क्वेश्चन है कहला डायरेक्ट द स्टेट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एटा होची क्वेश्चन एटा विलेज पंचायत है ना नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट को does not form a part of database outside part 4 of Indian Constitution तो मैंने क्वेश्चन पढ़ला उधर कौन लिखा है बोलो टिका सेम देखिए तो सब बाहर अछंती पढ़ो ठीक क्वेश्चन पढ़ो which of the following does not form a part of DPSP directives outside part 4 of Indian Constitution what is in ना तो आउटसाइड जो देइछि सेटा जे क्लेम्स ऑफ SC ST टू सर्विस आर्टिकल 335 पार्ट 16 में भी अछि हां वेरी गुड तो ये होची कथा पहले नेक्स्ट वन which of the following language is not there language कोड नहीं बिले को वेरी गुड राजस्थानी नहीं शाबाश नेक्स्ट वन को फटाफट इमरजेंसी आर्टिकल आज पर्यंत केबे लागू ही नहीं अच्छा which of the following are the discretionary power of the governor discretionary power को आज मु कहितली पढी के आसी चलो डिस्क्रिशन सिलेक्शन of the chief minister provide advice to the president regarding president's rule yes returning back to the bill सबु तो आंसर ऑल ऑफ द अबव सबु गुडा डिस्क्रिशन ठीक है तुम कह सर चीफ मिनिस्टर केमती डिस्क्रिशन आ जो टाइम रे फ्लोर रे केही नथिबो धर कॉन्फिडेंस केही जितुनी ताको डिस्क्रिशन माने डिस्क्रिशन माने होची मो इच्छा इच्छा ए माने गोटे प्रकार कोनती पावर तमरो तम डिसीजन तमे कहार अंडर ये हे के आसुना डिस्क्रिशन माने एक्चुअली देखिया बोले डिस्क्रिशन रियल रे एंजॉय करंती बट डिस्क्रिशनरी पावर बोली मानना जाए तो तुम कही के आनिबो जतबे हमर एटा मेजॉरिटी पार्टी आमे ही जितिबो कहि के याकू करो से बाध्य करियो भाई ये होची कथा अच्छा व्हिच आर्टिकल इज रिलेटेड टू मनी बिल 110 सभा 123 टा कोन करे बिले ऑर्डिनेंस केते केते दिन वैलिडिटी केते दिन हां 6 7.5 मास 6 हफ्ता 6 मास 6 हफ्ता 100 नंबर क्वेश्चन सेंचुरी बिले आउर गोटे क्वेश्चन अछि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेफर्ड द अयोध्या इशू हां एटा कहले केते हबो बस वेरी हैप्पी अप्रोच नहीं हां गालर हाथ मारी बसलेन तापर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे गाइस आज रो लास्ट क्वेश्चन मुंडो फटे देबी तुम मन एजुकेशन पळेला पर स्टेट रु ही होची भूल लास्ट क्वेश्चन भूल कर देले सार देला हैला आउ कोन करिए लास्ट क्वेश्चन थिला ओ कोन करिए हो बोले को आर्टिकल कहले चाइल्ड लेबर अंडर व्हिच आर्टिकल चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर 23 24 रे कोन अछि 24 होछि बॉन्डेज लेबर फोर्स लेबर 23 फोर्स लेबर 24 चाइल्ड उल्टा कह दिला हां तो उल्टा कह दिला भूल कहले पुनी आ बचल 23 रहउछि कोन फोर्स लेबर 24 होछि तमर चाइल्ड लेबर अच्छा ठीक अछि आर्टिकल पचारिबी तो सहज रे पचारिबी ठीक कहबो सहज पचल हबनी पीडीएफ ले मिल जिवो एटा एप्लीकेशन अपलोड होबो टेलीग्राम रे दिया जिवो व्हाट्सएप रे दिया जिवो सब पढ दियो तुम भाई पढे तुमको मिलियो ना भाई मो घर को नहीं पढेबी ठीक अछि आर्टिकल उडे पचारिया तो कहले बिले आर्टिकल को आर्टिकल
जॉइंट सिटिंग ठीक 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 शाबाश वेरी गुड आज पे एतिक बिले आई थिंक ए सेशन तुम मन को बहुत बेनिफिशियल हो जदी बेनिफिशियल हो लागू छी नियाती आगो को शेयर करो एंड काली वाला सेशन काली कोन अछि जल्दी तुम्हें क्वेश्चन कोन नतलो कोन भाई हमरा ई सब जल्दी जल्दी यूट्यूब को टिके ध्यान दियंतु सर दउची बा ध्यान दउची पर यूट्यूब रे तुम माने अछ परा काली की सिलोगिज्म बेले आउ सिलोगिज्म को ब्लड रिलेशन चलो फ्री रे सिलोगिज्म ब्लड रिलेशन करिया काली डन रेडी काली का सेशन रहला थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग गाइस जय जगन्नाथ गुड नाइट